Shout out YKSDOG. Shout out Sidhu Musiala, baby. We dating long distance. She give me Radiohead. I'm a creep, I'm a weirdo, and I'm bad in bed. How was it? Satvik, that was amazing. That was amazing. You liked it though. Yeah, I liked it. That was amazing. Thanks. Hello. Welcome to episode 9, I think, of Fresh Orange. I'm here with YKSDOG, who is the producer for Siege and stuff. A lot of songs. He has made a few songs. This episode could have been sponsored by Everready Batteries, or a lot of the stuff we'll talk about it. And like, if you're watching, like if you're the CEO of these companies and if you're watching, you can just give us some money. That's fine. Yeah. For the bag. Yeah, or like just for The bag. for The bag. supporting the arts and stuff. The bag. So we were just out. एक तो sorry like for making you sit here for the entire day. Chill भाई. मस्त हमने क्या क्या You देखा can talk हुआ है, to मस्त me. चीजें. हाँ? You can talk to me. You don't have to Yes, talk to the camera. Sorry. Like I get that you're popular and you have this. अबे भाई. तूने खुद के followers देखे हैं. हाँ. तो कि मेरे को popular बोल रहा let's है. move on. खुद के followers देखे हैं. But I don't have groupies now. You have the. I don't have groupies too. You have that. मैंने hip कब hop- बोला ये You चीज? have that hip hop cloud. I have the creator cloud, which is like. People find you sophisticated. हाँ, They it's find you like- cute. They They don't approach. find me It's cute. easy They're to like- approach you. Then it is. So this is that is correct. It's easy to approach me because like my profile is very warm, I think. Because the last time we were here, we recorded this, the one with the bad audio. Yeah. I posted a photo with you, and I got a ton of DMs asking me if you're single. तेरे को है ना, मेरे को तो नहीं है ना. वही हाँ, तो बात कह रहा हूँ मैं. That is the point. I was like the agency, बीच में जो I couldn't convey it to you. I tried to I gave them your ad and stuff. I didn't know if I could. इस बारी मैं बस कैमरा से बोल देता हूँ ये चश्मा उतार के. इस बारी अगर किसी को DM करता हूँ तो प्लीज कर देना. I am super down. कर देना भाई. Yes. हाँ. This could have been sponsored by Red Bull too. Yeah. Just for supporting For the arts. culture. Yeah. For the culture. What's the culture? Culture is अगर हिप हॉप के मामले में बोलूँ, culture is everything that you represent basically. What do you represent? I represent this mindset, middle class mindset कि जॉब भी करो, म्यूजिक भी बनाओ, बट जो कर रहा हो पूरा करो भाई. ऐसे बीच में छोड़ो. समझ रहा है कि मेक वर्क इतनी मेहनत करो कि मज़ा आ रहा है. मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेहनत का कुछ ना कुछ तो मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. दैट माइंड सेट आई थिंक. मेरे को पहले नहीं पता था कि मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ. आफ्टर आई मेट सीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई वाज अ फैन आल्सो. Did you just get into it without any philosophical backing? और फिर नहीं, मेरे को developed it? रिलेट होना स्टार्ट हुआ ना. दैट आई स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट Mm-hmm. एंड आई फेल्ट लाइक ओह फक, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो फील एंड समथिंग दैट आई आल्सो वांट टू रिप्रेजेंट. समझ रहा है वो चीज़ वैसा था वो. You just cursed, na? I don't know if you're past the YouTube limit. I'm not a very good गाली दे सकते YouTuber. हैं क्या? गाली दे सकते हैं, बट I think 30 seconds तक नहीं दे सकते. फिर उसके बाद दे सकते हैं. भाई तो फिर अगर इस हो गया है. हाँ, 4 मिनट हो गए. You can just curse whatever you want. fuck this shit भाई. ठीक है बोलो. Nice. भाई सीधे मत का गाना आना भाई, वो बोलते हैं भाई कौन सा? लुका छुपी सुना तूने? मैंने नहीं सुना. नहीं मत बोल भाई, लोग गाली देंगे तेरे को. नहीं मत बोलियो, हाँ बोलियो. सीधे मत का गाना पूछूं तो हाँ बोल रहा है. मैंने सुना. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सीधे. मैं तो हूँ भाई. हाँ. आई हैव अ टैटू सीधे मत के गाने का. I know. तो उनका एक गाना है भाई लुका छुपी, तो उसमें लाइन बता क्या है? हमको I don't think let's. लाइन नहीं बोलूँ गाने की. People younger than 18 watch this. I know that line. मैंने सुना है गाना. ओह यस, दैट लाइन. क्या हाँ. ठीक है भाई, लेट्स जस्ट लीव इट. हाँ तो वही गाना भाई. तो
you were here since the morning. You played my dad Yeah. in the shoot that we're doing. Dad. And this is so stupid. Like, I don't know if I'm allowed to say this, but like brands don't get social media, I think, and then they don't get agents. Don't you want another bag? I in do. future? Don't say that. Red Bull? If you do not understand social media, I do. Yeah. You don't even have to send me money. I drink a lot of your stuff, so just send me some Red Bull. Yeah. That's The it. new flavors that you make. Or the old ones, just anything. भाई at new this flavors point. बहुत. So one of my friends used to work with Red Bull and हाँ. she used to get me like free flavor, the flavors for free. भाई कुछ तो बैंगर फ्लेवर आते हैं ना और रिलीज ही नहीं करते भाई. I had this peach वाला. इतना बैंगर था भाई वो. Wow. This is not bad. This is pomegranate. I'll cut out this part. So if you are a content creator like me or an influencer like me, and you need to work hard, I would recommend the peachy freshness of Red Bull pomegranate flavor, winter edition. Winter edition. Red Bull, please sponsor me. एक काम करते हैं actually, like we laid out these things as a joke, but let's just have Red Bull and then let's have melatonin gummies to see what happens. Damn. भाई Do you want to? दिमाग फट जाएगा. मैं तो कर दूंगा. ठीक है. Actually, खोलना. Sponsor us, ZZ Quill Weeks. मेरे को वैसे ही बहुत नींद नहीं आती है भाई. परेशान हुआ मैं. नींद ही नहीं आती भाई. Okay, so we'll. Popping pills. Such a rapper thing This to is do. the hip hop. Such a rapper thing to do. Fresh orange. So ठीक है पर we're popping this melatonin. Yeah. Okay. Then we'll drink half of the Red Bull. Then our body will screenshot. तो यार पता नहीं. Alright. This is for the audio listeners. क्या होता है वो? कौन सी वीडियोस आती हैं वो? ASMR. हाँ. This is not like a usual episode जो मेरा होता है because I keep talking usually. But ठीक है, थक ऐसी गए. चीज तो शायद किसी के साथ भी ना करे. हाँ. It's just Hopefully. me. Yeah. I think I'm a bad influence. निकालो भाई. You don't copy Yes. my jokes. This actually does hit though. Like we'll just get sleepy midway through the episode. Damn. But ठीक है, that's what The idea is. That's what the Red Bull is for. क्या? अब हम तुम्हें दिखाएंगे Red Bull कितना असर करती है. It's एक्सपेरिमेंट ही हो गया But भाई. तो. ठीक है, but this is we're a science channel. But ठीक है, we're interviewing you for a podcast. Yeah. What are your top 5 Artists? musical genres? Musical genres. I don't know. What are your top 5 artists? अच्छा. India. इंडिया में. Yeah. Easy top 5. See them up. Has to be. Siege. Has to be. Come closer. My audio is bar fuck up. See them out. Has to be. The Siege. Boy Blank. Foe. And this guy. Schoolboy Pax. So these are my top 5 in India right now. Nobody really mainstream. See them out. See them out still isn't as mainstream as like Badshah. See them out. Okay, cool. Keep sipping. You haven't worked with them, no? I haven't worked with them. I have met them like 2-3 times. I have shown this tattoo of mine to them, but I haven't. क्या worked बोले? with Were they like weird? them. No, they loved it, bhai. They love. Bhai, the thing is, what I have realized is कि कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं ना कि वो भाई की तो weird चीज़ है, ये लोग मेरे को follow को कर रहे हैं इतने ज़्यादा. Some artists do like that. They are not like that. And why? भाई तुमने मेहनत इसलिए करी है ना ताकि तुम्हें ये attraction और ये सब चीज़ें मिले. भाई तो आई फाइंड इट वेरी अजीब व्हेन पीपल बी लाइक कि भाई ये लोग इतना मैसेज क्यों करते हैं, ये लोग इतना फॉलो क्यों करते हैं. अबे दिस इज द शिट दैट आई एम वर्किंग फॉर. आई विश टू हैव दिस थिंग. जैसे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था. शाहरुख खान से इंटरव्यू पूछती कि क्या अब अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना चाहोगे. एंड ये था कि पागल है क्या, इतनी मेहनत किस बात के लिए करी है मैंने. सेम थिंग भाई. वो बहुत प्यारे लोग हैं भाई. अगर तुमसे 1-on-1 मिलेगा ना
बहुत प्यारे लोग हैं भाई, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल. मैंने ट्राई किया था उन्होंने मिलना. आई वाज लाइक एक वर यू मीटिंग इन देम इन अ शो? नहीं, आई एम शूटिंग दैट डॉक्यूमेंट्री ना, VHS वाली. So I DM'd him. I DM'd both of them separately on their Instagram accounts, then on their main Instagram account, and then I think I emailed their manager or something. सबने पोस्ट कर दिया मुझे चारों ने. Because they are mainstream also now. But ठीक है, they can. But once you like, so where I met them, I went to this music video shoot and I met them over there once. ठीक है, so they were very welcoming over there. मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मेरे को समझ रहा है. दे आर वेरी वेलकमिंग. वो ऐसा फील नहीं कराते कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट उनका म्यूज़िक है, उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बट अगर ऑडियंस ही नहीं होती तो म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं हो पाता. तो दे रिस्पेक्ट देयर ऑडियंस अ लॉट. द फैक्ट, आई लव दैट फैक्ट सो मच कि दे हैव ऑडियंस की रिस्पेक्ट है. ये नहीं है कि ऑडियंस है तो क्या हुआ. आई हैव नेवर सीन देम लाइक रैंडमली जस्ट शो बुक करा, टिकट बुक की, उसका शो कैंसिल कर दिया कि अब नहीं आ रहे. आई हैव नेवर सीन देम डूइंग लाइक दैट. I have not been around hip hop, live hip hop at least that much. Like to know people who do cancel, but okay, that's वो चीज़ है. people cancel it. Yeah, sometimes people cancel it. They might have reasons. They but could still have it's reasons. But वही है कि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होती है ना, सॉरी ऑडियंस की रिस्पेक्ट होती है. ऑडियंस पैसे खर्चे कहाँ से आ रही होगी भाई, तू सोच. मतलब आई हैव सीन कि दिल्ली में शो हो रहा है, लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, आगरा से लौंडे आ रहे हैं भाई, लखनऊ से. तो कुछ है ना भाई, तभी आ रहे हैं ना. वही चीज़ भाई. और ऐसे रैंडमली कैंसिल कर दे शो कि वो आर्टिस्ट ही ना है जिसको आना है. Why do you think इतना रिलेट करते लोग? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द लिंगो. ठीक है, मी born and brought up in Delhi. ठीक है, पैदा भी यहीं पे हुआ. मोस्टली पीपल हु लिव इन दिल्ली केम फ्रॉम सम अदर प्लेसेस. ठीक है, तो द लिंगो हेयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द प्लेसेस. ठीक है, तो जो लिंगो है उनकी पहले वो बातें प्लस लाइक जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो देयर इज दिस थिंग कि क्रिकेट की ना बॉल आती है विक्की और कॉस्को. ठीक है, तो दे हैव अ बार इन देयर सॉन्ग जिसमें बताते हैं तो बॉल बाउंस हो ना तो उसको ना जलाते हैं नीचे से माचिस से ना. इट्स अ वेरी डेली थिंग टू डू. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ. बाउंस करे तो वो नीचे जलाते हैं. वो उनके गाने में रेफरेंस है भाई. ओके, तो इट्स लाइक वेरी, उनके गाने में रेफरेंस है. friendly उनके गाने में रेफरेंस है कि विमल पता तेरे को क्या होती है, उसको तो कॉइन नहीं होता टॉस करके तो उसको उछाल के घुमाते हैं. हाँ, आई हैव डन दैट. हाँ, तो दे हैव अ रेफरेंस ऑफ दैट इन देयर सॉन्ग. तो इट फील्स सो रिलेटेबल. ये भाई ये तो कोई अपना बंदा ही बात कर रहा है, तो वो चीज़ होती है. That Vimal thing never made sense क्योंकि it gets blown away. हाँ, वो भी बात है, बट बच्चे होते थे ना तो यार वही चीज़. I remember like back when we used to play street cricket. Is the Kami hating me right now? मेरे को भी लग रहा है थोड़ा. I'm a बड़ा chill हो like, गया हूँ. not chilled out, but like my voice is slurring Yup. a little bit. कोई नहीं, Red Bull Red Bull, the minty freshness of Red Bull pomegranate edition. We used to play cricket and there was always this one guy who would pick up cigarette butts instead of the Vimal packets and then throw them inside people's t-shirts. The fuck? And then those people would go home and get beaten up by their parents. भाई तो fucked up है भाई. उसको जेल कराओ भाई, उसे जेल होनी चाहिए भाई. It is still funny यार. Imagine getting. हाँ भाई कि भाई. Imagine the parents, उनका 8 साल का लड़का सिगरेट स्मेल करता हुआ आ रहा है घर पे. The fuck? टी-शर्ट के पीछे डालो बेचारे को पता भी नहीं चलेगा भाई. नहीं बताते थे मतलब nobody else would help, which is like kind of messed up and like I shouldn't have spoken about it on camera. Bullying. But I was also bullied, so like हाँ, it makes sense. देखो भाई, या तो बहुत सिंपल आइडियोलॉजी है, या तो तुम बुली होते हो या तो तुम बुली करते हो या फिर तुम ट्रांजिशन कर जाते हो. वहाँ पे सब था. It wasn't even a transition. You were getting bullied one day and then bullying the other day. मेरा तो ट्रांजिशन हुआ था. पहले मैं बहुत बुली होता था, फिर मैं 9th क्लास में आया. मैं ऐसे चलता रहा तो जिंदगी भर यही होता रहेगा. फिर मैं ट्रांजिशन कर गया. You started bullying people? I haven't started bullying people. I started defending myself first. तो मैं थोड़ा मजे ले लेता था ऐसे. हाँ, किसी की कोई बंदा क्लास में सो रहा तो उसकी लेसेस बांध दी,
मैं मैम देखो सो रहा है, तो मैम से डांटने आती थी, तो उठता था तो गिर जाता था. How does that work? It works. That sounds like a Tom and Jerry skit. Then. भाई DPS सोनीपत में कुछ भी हो सकता है भाई. DPS सोनीपत was You studied in DPS Sonipat. yeah. हाँ, but boarding का क्या था? But सोनीपत. हाँ, that's like Hostel. the worst kind of. Hostel. Like, I know worse kinds of DPS. जैसे कानपुर में. Like I never understood why there are DPS in Kanpur. भाई DPS दुबई में है भाई. तू क्या बात कर रहा है? Like it's Delhi. Delhi Public School दुबई. तो like you should come up with a better branding maybe. अरे उनका वो है, they have this tagline service before self. अब स्कूल के बारे में ऐसे बोलना चाहिए क्या? मेरा स्कूल बहुत अच्छा था भाई. They aren't going to sponsor this. Still मेरा स्कूल बहुत अच्छा था भाई. My What school if you blow up or I blow up? And then they see. ये कहीं ये हमारे स्कूल के बारे में ऐसा उल्टा. भाई तेरे को पता है जब रोनाल्डो ने ऐसे कोक की बोतल हटा दी थी तो कोक की सेल्स गिर गई थी. स्टॉक गिरा था seriously. हाँ जो भी था. हाँ. सॉरी स्टॉक गिर गया था. हाँ. तो भाई, सोच भाई. हाँ तो ठीक है. We are not Ronaldo. हाँ. That is also. We are giving free sponsorship like Red Bull and Vicks. They aren't giving us anything. Orbit भी है भाई. Orbit and Eveready. हाँ भाई. For some reason. और कुछ है? Anything that gives us money. क्यों है भाई? क्यों है भाई? I don't have that. मेरा अड्डा है. कोई बात I'm नहीं. wearing slippers and I can't put up my feet क्योंकि टोज दिखेंगे ना. हाँ then you'll see my dog. टोज नहीं दिखाने भाई. मेरे को बहुत डर लगता है भाई. Bhai, I have this recurring meme now where people ask for my feet pics Don't. in my community. Don't. So I posted like a censored photo of the feet. I know. And then in Discord they were discussing how fucked up my feet are despite the censor. They were like, they're so dirty. Damn. There was no way to even see that they are dirty. They were just like, this is dirty. This is not. The thing is कि I know this for a fact कि people do this. People ask random people for their feet pictures and they sell them on Feet Finder. Why do you know that? Because I have this friend in America. He does that. Will not name him, but yeah, he does. Name that. him? No. He's a good friend. He's like a best friend. So I will not name. He just does that for fun. But there are people who do He this sells feet pics for fun. हाँ. That's does that sentence make sense? Whatever. We will just. Have you ever asked anyone for feet pics? No. I do not have like a feet fetish. Picture देख के तो नहीं भाई. Like picture नहीं देख सकता मैं भाई. Do you know anyone with a feet who asks for feet pics? No. Apart from your friend in America, apparently, who's like a criminal. है वो से पैसे कमाने के लिए करता है भाई. हाँ. Criminal भाई. Crime. अमेरिका में नहीं है क्राइम. Apparently, इंडिया में होगा. What like? You need consent from the person who is. That is true. हाँ तूने कंसेंट लेगी तो फोटो मांगी. Let's just leave it. It is getting fucked up. By the minute we are like talking if I am about selling feet pics of somebody, I will first ask them कि can I sell these pics? I think वो कुछ लोगों को ऐसे पैसे बांट भी देता है royalties of their So feet. he's like the Robin Hood of हाँ. feet photos. Feet pictures ली बेची ये बोले भाई तेरा 30%. That's still too low to me. एजेंसी भी तो यही करती तो क्या बात कर रहा है It's भाई. like their हाँ ठीक है. हाँ I can't say anything It's the against agency. agencies. I love agencies. Bring me sponsorships. हाँ तो we were sponsored. We were like shooting my first sponsored reel throughout, and you were here like as my father. Dad, and daddy. And you spent your entire Sunday here. हाँ तो कोई नहीं भाई. How does that feel to have no life? भाई मैं रात को ये सोच रहा था भाई कि लोनली तो कितना हूँ भाई मैं. डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग लोनली तो मैं हूँ. I will not deny that. लोनली तो मैं हूँ. Do you think it is because of feminism? नहीं भाई ऐसा Do you want to speak out against? नहीं. I am not against feminism. You are a feminist. हाँ मतलब I respect all genders of all kinds. ऐसा कुछ नहीं है. It's not about just one gender भाई. It's about everyone. Everyone should be happy. Everyone should be respected. सीधी सारी बात है भाई. मर्द जितनी मेहनत करता औरत को उतनी मेहनत. तो हंस क्यों रहा है भाई? हाँ सर भाई ये भाई अच्छी बात बोल रहे हो तो स्पॉट पे डाल देगा. That genuinely. Let's get back to the podcast. What are your top 5 favorite songs? Favorite songs होती है भाई. Top 5 favorite songs. Top 5 favorite songs are like 60s Bollywood.
सुना ही नहीं भाई इतना, टू बी वेरी ठीक है, top 5 favorite, like top 5 songs that you respect the art behind, हार्ड like, भी as a producer. But like, okay, this took a lot Good of question. Sip on that Red Bull. Cheers. Orbit. So first song classic mod 2, ठीक है. Classic mod 2, I love that song. Might be one of the first Indian hip hop songs that I have heard. The thing with the tabla that Sis does in that song is just amazing. I loved it so much. Plus the rap and everything, the video, it's like a whole vibe. ठीक है. Then there's this song by Raga, Jamna Par. That song was like your introduction to Delhi. समझ रहा है? If you listen to that song, you will understand what Delhi is, what Delhi represents. So that song is one of them up there. I will also say. But like that's the lyricism that you're appreciating. The production. See, if I listen to a song, मैं कभी भी ऐसे separate करके सुनता हूँ, but that is in like a different sense. अभी जैसा मैं सुनता हूँ तो आई लिसन, अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ ना एज अ लिसनर, तो मैं तेरे को एक साथ ही बता सकता हूँ, मैं ऐसे अलग अलग करके नहीं बता सकता, फिर तो बहुत Okay. ये अलग से ही पॉडकास्ट बन जाएगा वो. हाँ, like nobody is actually listening. जो भी हुआ है, हाँ. तुम सब मेरे को देख रहे हो क्या? मैं इतना स्मार्ट है क्या हम लोग हैं, ये सब हमें देख रहे लोग. हाँ. जो भी हो भाई, जमुना I have to तो I have to also plug this song of mine, Rent is Due, one of the best song. मजाक भी नहीं कर रहा भाई, मेरे को तो लगता है. I did like the production of it. I to like it. Plus the lyricism and everything, the vision behind it. Then there is this song by Fo Music, Suburb. So the song is about तो the production is crazy. तो मेरा दोस्त है वामन करके, वामन उसका IG है waman.wtf. Shout Wear out. this while you're talking about music. Shout out to Waman. Wear this while you're talking Oh about yes. Shout out to Waman. Now you look like a producer. Yeah. तो वामन बस बंदा है भाई. तो the thing is he has done bass line and everything in that song, और ऐसा तक इसने बजाई है. But the thing is he has done that with his keyboard. तो तुम्हारा जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है ना, तो when you are working you can map that as a piano, ठीक है, पूरा उसमें. तो he has done that with his fingers and everything with the keyboard. बहुत क्रेजी लगता है भाई that song. प्लस फो का वो गाना है, तो फो में जो लिरिसिज्म एज इन वैल्यू जो आ रही है उससे, इट्स अबाउट अ डोमिनेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमेन. समझ रहा है व्हाट शी कैन प्रोवाइड. ऐसा होता है ना, लड़कियां हमेशा बोलती चाहिए चीज़, तो नहीं है भाई, नो बुलशिट, ये है, ये दे सकती मैं भाई, चाहिए तो ले अंदर जा, मत गाना भाई वो. एंड देन देयर दिस सॉन्ग कोर्ट कचहरी विद बॉय ब्लैंक एंड ध्रुव राजपाल. वो गाने की प्रोडक्शन ही अनस्टैंड है भाई, बहुत पसंद है वो गाना मेरे को. I'll try to play them like a little bit. हाँ, Without getting copyrighted. आई डोंट थिंक इन गानों पे कॉपीराइट आएगा. तीनों वाले पे आ सकता है, हाँ. बाकियों पे आई डोंट थिंक आएगा. रेंट इज ड्यू पे हम नहीं करेंगे. Thanks. हाँ भाई, बट यस. I'll try. Can you get me some merch? मर्च. यस हाँ, मिल जाएगा भाई. I'll give you merch when I make it. मिल जाएगा भाई. सी भाई से पूछना पड़ेगा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ. I'll ask you. हाँ, यस. व्हाट तेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था इंडियन हिप हॉप से, तू ये बता. My तो like it was during COVID जिसमें actually I like got into DHH, और मैं बहुत दूर से देख रहा था. I was in Kanpur. So there are no gigs in Kanpur, and I don't think there are any actually rappers in Kanpur. There are rappers from, But they come here and then they start. हाँ, वो चीज़ तो है. कानपुर में नहीं करता है, एंड कानपुर में करते भी हैं तो इट्स लाइक नॉट वेरी, दे डोंट रियली गेट एनीवेयर, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है. तो वहाँ पे आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस दे साउंडेड लाइक एक्चुअल लाइक हसल म्यूजिक, एंड आई वाज गोइंग थ्रू लाइक फाइनेंशियल स्टफ. तो उस टाइम पे वो हसल म्यूजिक सुन के बड़ा अच्छा लगता था. हाँ, राइट. एंड देन देयर वाज आल्सो लाइक दिस, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 4 of us, और उस टाइम पे इधर कोविड था तो सब घर पे ही थे. तो वी वुड जस्ट गेट इन अ कार एंड लाइक
Play pop music. music very hard and drive around. And do what? No, Just drive nothing around. else. You just drive. We were just driving around. Trusting you. Yeah, we would drive around at normal speeds, and then we would get home at like 8 p.m. Good. Yeah. So वो Such a Kanpur thing to do. I know. Yeah, Kanpur is famous for like law-abiding citizens. मस्त है भाई, मैं भी कहता ऐसे IIT कानपुर तो मस्त है भाई. You went to the best part of Kanpur, like the not the best part, but like the purest part. कि बस वहाँ पे पढ़ाकू बच्चे. हाँ. प्लस उनका ऐसे रेजिडेंशियल कैंपस होता ना, तो मैं कानपुर में बाहर तो गया नहीं भाई, कैंपस ही पूरा घूम लेता तो वही बड़ी बात थी भाई. Do you know the college I went to? Which college do you? It's Manav Rachna. अरे भाई तू तो मेरे से भी बिल्कुल बड़े कॉलेज में गया था भाई. I know, it's a shitty college. मैं तो IIT में गया था भाई. हाँ, you won in life. So like this Manav Rachna, I think the athletics team, all athletics teams in Manav Rachna are banned from ever going to IIT Kanpur. Why? Because एक बार ये कुछ हुआ था, there like a male athletic team, I don't remember किस लिए था, I think it was the basketball team or something. They went there and then like a night before the match they burnt the mattresses out in the ground. I understand where they're coming from. Just for the fun of it. हाँ, I understand भाई. And I respect them. Simple pleasures भाई, simple pleasures. गद्दे जला दो, bunk beds तोड़ दो. Bunk beds तोड़े हुए हैं ना हमने, इसलिए बता. I have never done it. I have never really lived in a hostel. I lived during my first सबसे year. सिंपल प्लेजर पता क्या होता है? वॉशरूम की ट्यूबलाइट निकाली, उससे पॉट में डाल दी और कमरे के बाहर आ गए, फिर वो फट जाती है. What? Yes, was a menace भाई. Did you get caught about it? नहीं. Why were you doing it? Fun, simple pleasures भाई. Simple pleasures. अबे देखो भाई, वहाँ पे स्कूल में लड़कियों से बात नहीं करता था मैं. I was not. Also, this conversation is very derailed because I was talking about Kanpur and how I got into DHH. So we'll get back to it. Yeah. I think this is just testimony of the fact that we need to get the bag. That Vicks ZZZ quill is amazing and it works very well. So if you're struggling with insomnia, especially if you are a creative person like me, pop ones. Yeah, please pop one. Yes, and it helps. I don't have a code to offer yet, but someday I will. उसके लिए अलग सीरीज बना दियो ना. हाँ. Unsponsored post. It will be a sponsored post. I'll just sleep for 90 seconds and it will be an art piece. Instagram पे live चलेगा, you सोते हो. हाँ. That will be amazing. Crazy idea. Didn't Zayn Malik do it? Did he do that? There was this I know Kai Senator. Some white guy did it, like some white heartthrob type of guy है. Like what? It was either Harry Styles or Zayn Malik or someone. Harry Styles तो बिल्कुल नहीं पसंद है मेरे को. Sorry women, but Harry Styles नहीं पसंद है मेरे को. ठीक है, I don't know. तेरे को पसंद है? I haven't heard of his songs कभी. मैंने भी नहीं सुने, but मुझे तब भी नहीं पसंद है. Why? It's not about the music भाई. It's about his aura. हाँ, the persona that he carries. It feels very pretentious. I'm not going to lie. How is it pretentious? I just know that he wears like weird women's clothing in an effort to like fight gender norms. हाँ, queer baiting लगती है मेरे को बहुत ज़्यादा. Queer baiting, okay. हाँ. Are you trying to get the leftist women in my audience? Oh my god, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं. But मेरे को लगता है ऐसा. Queer baiting, okay. बहुत लोग करते हैं. Jaden Smith does this, but उसका ऐसा नहीं लगता. ठीक है, उसका ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती कर रहा है. It feels like that he really wants to represent. Harry Styles का ऐसा नहीं लगता that he really wants to represent that. Isn't Harry Styles straight also? I think he's not straight. Okay. I don't know. I don't know. Or like I think so. One of my ex. Also, I don't know the pronouns of any of these people, so yeah, I'm sorry for that. One of my ex used to love Harry Styles. So why tha? She told me that he has some song which talks about his sexuality, but I really don't know about it. I've heard this one song उसका, I think Carolina or something. मेरे को नहीं पता भाई. I don't know. क्यों पूछ रहा है? मैं तो नहीं सुने गा. I don't know. मेरे को ज़ेन मलिक तो बहुत पसंद है भाई, झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई. Why? ज़ेन मलिक है. He's hot. हाँ भाई, hot है भाई वो. वैसा बन जाऊँगा तो मज़ा आ जाए भाई.
भाई Why do we keep ऑकवर्ड doing this? हैंडशेक करता है भाई. मैं दिखाता हूँ भाई, ऐसे कर, ऐसे ढीला. हाँ, इज अ रैपर नाउ, Yeah. सर्टिफाइड. Someday. हाँ, समडे. तो वही है, जेन मलिक हॉट है भाई. तेरे को नहीं लगता क्या? दोनों equally hot नहीं है. नहीं भाई, जेन मलिक हैज दैट ऑरा, समझ रहा है? That what हो रहा ही, मेरे को हर स्टाइल का ये भी लगता है कि बहुत प्रिटेंशियसली वो सॉफ्ट हुआ है, बट वो ऐसे एग्रेसिव सा होगा. उसका लगता है कि वो है मैनली, तो वो दिखाता है कि वो मैनली है, समझ रहा है? मेरे को ऐसा लगता है. It's also a lot of PR, like at that level of हाँ, popularity. मतलब वो भी बात है कि हमें जो दिख रहा है क्या पता वो हाँ. सच है या नहीं है. हम तो बग सकते हैं भाई. यस. Like even you do PR at I your do PR? level. You go live, that's PR. That's like setting हाँ, a जो brand for 3 your. लोग देखते हैं उस पर वो कहते हैं भैया ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं एक बहुत मैं खुश होता होता हूँ हूँ. हमेशा. I'm like I go up to see it. Then I जाना पड़ता है भाई. थोड़ा बहुत ऐसे इंटरेक्शन होनी चाहिए ना, बाद में जाके काम हो जाएगी तो लोगों को लगना नहीं चाहिए ना कि पहले तो नहीं आया. need to go live. हाँ भाई, इसके बाद like right after recording this एक बार live जाता हूँ. डन भाई. तो वही है कि हाँ, तो you are attracted to Zayn Malik. हाँ, ज़ेन मलिक हॉट है भाई. ज़ेन मलिक तो हॉट है. मैं कुछ करने वाला था भाई. चलो जब अपने ये मैं खुद ही बात कर लेता हूँ. Wait. I got into DHS because मैं हसल का सुनता था. हाँ, हसन म्यूजिक सुनता था ये. Like Prabdeep and stuff. And I was listening to them from afar. Right. Then I got to Delhi, saw the scene, and then सीन फैसिनेटिंग तो है ना. from a distance. Like once you get into it, you realize that it's just 11th के लड़के. Like it's just 11th graders who are very rich. So those are the ones attending those concerts. I don't care. I don't have a rap career I can talk about. हाँ हाँ हाँ. हाँ, I have like 11 12th के अमीर लड़के आ रहे हैं. मेरे भी शोज में आओ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे शोज में भी आए भाई. अच्छी बात है, एज अ आर्टिस्ट अच्छी बात है भाई. आई लॉन्ग. हाँ, it is. But like, भाई, but then don't act like you like resonate. I with that understand. hustle. I understand what you are trying to say here. I understand. This has been the debate from the start, जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था. क्योंकि तो द थिंग इज, इंडिया का कल्चर वाइज बहुत वो है कि एक्सट्रीम कल्चर है. या तो तुम बहुत ही अमीर हो या तो तुम बहुत ही गरीब हो. ठीक है, मिडिल क्लास है. मिडिल क्लास हसल अलग ही है भाई, उसके बारे में इतना इंडिया में आता भाई, है. इंडिया में everyone thinks they're middle class. That's also a हाँ, problem. वो भी बात है. अमीर बंदा भी कहता है. द थिंग इज, इंडिया में ना पैसे को लेके शेम है कि इस पे बहुत पैसा है भाई, ये तो गलती करता होगा भाई, तो सारा काला पैसा है भाई, ये तो बदमाश होगा भाई. तो इंडिया में ना पैसे को लेके शेम बहुत है, तो उस वजह से लोग दिखाते नहीं हैं. ठीक है, लोग थोड़ा सा डरते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे की बात कर दी ना तो ये तो किसी दिन पुलिस वाले ही ना आ जाए भाई, CBI वाले आ गए रेड मारने भाई. लोगों को डर लगता है उस बात का. तो वो चीज़ है, तो इसलिए सब वो बोलते क्या हम पे कहाँ पैसे हैं, हम पे. जैसे पेपर में अच्छा होता है ना कि मैंने तो कहाँ ही पढ़ा है, उसने सब पढ़ा, हम पे तो कहाँ पैसे भाई, तू दे देता, मेरे को कहाँ पैसे. How did we get to this conversation? मेरी तो गोल्ड फिश मेमोरी है भाई, तो मेरे से We were talking about how DHH audience is too rich to be a DHH audience. द थिंग इज, अब वही है, दिस हैज़ बीन अ डिबेट फ्रॉम स्टार्ट. बट वही है कि इंडिया में एक्सट्रीम कल्चर है, या तो तुम बहुत रिच हो या तो तुम बहुत पुअर हो. प्लस हिप हॉप में पुअर होना कूल होता है अपेरेंटली, लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि आई हेट दिस फैक्ट काइंड ऑफ कि भाई पुअर होना कूल नहीं है भाई, बहुत लौट लगते हैं भाई, बहुत लगते हैं. तो वही चीज़ है, समटाइम गेट अनॉयड विद इट. बट एज अ आर्टिस्ट अच्छा किया भाई, अगर तुम्हारे टिकट्स बिक रही हैं भाई, तुम 1000 रुपये की टिकट्स भी डाल लो बिक रही हैं, तो 1500 की टी-शर्ट भी बेच रहे हो तो बिक रही है, तो अच्छी बात ही है भाई, खुशी ही होगी. वो चीज़ है. Sorry, I was just checking. We are over time. ठीक है. But let's continue. मस्त है भाई. करते रहो भाई. Getting back to where I started this entire tangent from. I'm Yes. sorry if you're still watching. I'm sorry if you're still watching. We were shooting like I don't know if I'm allowed to. अभी We were shooting a branded video. रुक जाओ. हाँ, आप स्टार्ट कर फिर से. दिखाड़ दी मत बोल. Knowing how I edit this podcast, it's like I'm used to editing my 90-second वाले clips, right? So I watch them through to the end. हंसने वाला तो उसके पागल हो जाएगा. In the podcast, I don't care. Like नहीं. I just
can't get myself to watch the entire podcast and edit it. मैं डाल देता हूँ. ये वाला काट दियो, I don't- टाइम देख ले, ये काट दियो पर तेरे नुकसान हो जाएगा बहुत. So we are doing our first, like, I was doing my first sponsored shoot, so they were like professional teams and stuff. So, right. And भाई then वो gear तो मस्त था भाई उनका, मेरे को ट्राइपॉड बहुत मस्त लगा भाई वो. that tripod, look at my tripod right now. हाँ भाई वो ट्राइपॉड तो If I banger switch है on भाई. that cooler, it will fall off. वही भाई. Do you see how the screen is tilted a little? That's not an artistic choice we've made. It is what It was made for us by the tripod. So they had like these thick tripods. I tried moving one of them. It was actually heavy. That was nice. पूरा इसलिए तो ऐसे शॉट ले रहा ना मूवमेंट का, तो इसमें लेगा तो वैसे ऐसे होगा, स्मूथ हुआ एकदम मस्त. मतलब गियर तो मस्त था भाई. वो लाइट, वो लंबी वाली लाइट तो पसंद आ गई मेरे को. ऐसे ही ले लो रैंडमली घर पे लगाने के लिए भाई. So anyway, we went out to eat after that, and you don't eat chicken. Yes, I don't And eat chicken. I'm a vegetarian. You decided not to tell me वहाँ पे because you were like podcast पे बताऊंगा. Podcast में बताऊंगा, which is a very normal thing to say for a person. So I don't eat तो chicken. मैं चिकन क्यों नहीं खाता? तो बेसिकली मेरी मम्मी वेजिटेरियन है, ठीक है. मेरी तो बकेट लिस्ट थी कि मैं जितने मीट एग्जिस्ट करता है ना दुनिया में सब खाऊं, सब. मैंने कुछ तो खा भी रखे हैं, बट अब मैं नहीं खाता. तो आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट एज अ म्यूजिशियन. मेरी मम्मी ने बोला बिफोर पुटिंग आउट माई फर्स्ट सॉन्ग कि अगर बेटा तुम चिकन खाओगे तो तुम्हारे गाने नहीं चलेंगे. तो उन्होंने मेरे को स्पॉट पे डाल लिया भाई, तो उससे मैं चिकन नहीं खाता. और अब सीन की गाने चल रहे हैं तो डर लगता है. That's not an interesting story. इट इज भाई You यार. hyped it up too much. You were like, भाई मैं podcast में बताऊंगा तो हंसते लोटपोट हो जाएगा. भाई इंटरेस्टिंग नहीं है कि भाई मतलब. मम्मी ने मना किया ना बेसिकली चिकन. हाँ मम्मी ने मना करा भाई, बट मम्मी ने क्या रीजन दिया है भाई मना करने के लिए? तू ये देख रहा है कह रही बेटा तुम्हारा करियर ही नहीं चलेगा तुम चिकन खाओगे तो. मम्मी है हेटर एक्चुअली. हाँ भाई मम्मी हेटर है भाई, ऐसा बात है भाई. मम्मी बढ़िया है भाई. मेरा पहला गाना मम्मी की वजह से चला था भाई, क्योंकि लास्ट में मम्मी का ना वॉइस नोट है, लोगों को बहुत हिट करता है वो. मेरी मम्मी कहते बेटा रॉयल्टीज दो मेरी. मैं कह रहा मेरे पे तो आए पहले. भाई मम्मी है हेटर. हाँ भाई. You should move out actually. अब मैं चिकन तब भी नहीं खाऊंगा भाई, दिमाग में बात फंस चुकी है भाई. Seeing the numbers that I'm getting now on songs, people I'm talking to, डर लगता है भाई चिकन खाने से. खा लिया तो क्या कोलैप्स करके सब कुछ तो. खा लिया तो उड़ गया तो. हाँ भाई. Then what? क्या उड़ गया? What if you just had one piece of chicken and you get like a million streams that night? ये रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड नहीं यार. इस तो पता नहीं भाई, पता नहीं. बट हाँ चिकन तो पहले भी खाता था, बहुत खाता था भाई. तब तो कुछ अच्छा नहीं हुआ. नहीं खाने के बाद कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई. तो हाँ मतलब बढ़िया है. Whatever works. whatever works. Yeah. मम्मी ने बोल दिया तो मम्मी ने बोल दिया भाई. मम्मी की बात मानता हूँ भाई. आई एम अ मॉमस बॉय ऑल्सो. Okay, I think this section of we are entering the section that we recorded last time as well. This is just डेटिंग टिप्स. not even dating tips, just YKSDOG trying to get laid through my podcast. So, I am not trying to get laid first. I just want to be loved. of That is course. all. Yeah, you're a lover. Yes, I'm a First, lover. yeah. I'm not a hater. Yeah. मैं अपनी आंखें दिखा के बात करूँ. हमारी आंखें बहुत सुंदर है. कुछ नहीं. गए भाई हो गए. हाँ. हाँ तो भाई तो क्या बोल रहा था ना? You were telling how you are a lover. हाँ. How am I lover? मैं बहुत केयरिंग हूँ. हाँ. मैं बहुत ध्यान रखता हूँ. 6 feet. 6 feet. हाँ. I make music. हाँ. Feminist. If you do something wrong with me, I can turn you to in a song. That's not a plus point. If you do something good also, then I can also turn you into a song. You know how there's this entire trend, like there's this meme about how you should never वॉइस send नोट से भेजना rappers चाहिए. voice notes. हाँ मैंने यूज कर रखा है भाई. मम्मी का कौन यूज करता? मम्मी का कर रखा है, एक्स गर्लफ्रेंड का भी कर रखा है भाई. अच्छा, that's then I'm a good guy. I asked for her permission. Then I did like it. before the breakup or after? After the breakup, Okay. I asked her for the permission. I कि can't see shit in this. मैंने उससे परमिशन ली कि क्या मैं वॉइस नोट यूज कर सकता हूँ. मैं उसका नाम भी बीप कर रखा है उसमें. उसका नाम सुन देता. तो वही क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ भाई. I'm a mama's boy also. Yes. You had Bumble tips to give the audience. We will first get to ये क्या हो गया?
रुक गया भाई कैमरा। तो बम्बल का तो सिंपल है भाई, पेड प्रीमियम वर्जन लो अगर तुम मर्द हो तो। Shout out Bumble, हाँ भाई। sponsor this podcast. यस, बम्बल का प्रीमियम वर्जन लो क्योंकि फ़ायदा होता है। रीज़न बीइंग, मान ले कि तू you are this hot chick who lives in South Delhi and I am this guy, normal guy who lives in North Delhi, ठीक है। तो 20-25 किलोमीटर का तो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और तूने सेट कर रखा है अपना डिस्टेंस कितना, रेडियस 5 to 10 किलोमीटर, ठीक है। मैंने कर रखा है 160 किलोमीटर, जो आ रहा है दे दो, ठीक है। That's थोड़ा सा degrade, isn't that degrading to both men? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, इट इज जस्ट द लिंगो भाई। मेरा बेसिकली मतलब है कि आई नीड टू एक्सप्लोर पीपल, ऑल काइंड ऑफ पीपल, वो चीज़। But will you go like 160 kilometers away for a date? भाई 160 किलोमीटर वाला तो बात ही नहीं करेगा ना मेरे से कुछ भी, वो भी तो सेंसिबल है, वो तो मैं चूतिया वो ना। दोनों ने 160 किलोमीटर लगा रखा है. So you're both desperate enough to go meet somewhere in the हाँ middle. मतलब ट्रिप भी हो जाएगी भाई वैसे देखा जाए तो भाई। Road trip. हाँ भाई, गुड आइडिया भाई। इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू दैट लेट मी नो। Just make a vlog like going on a Tinder date 80 अभी kilometers. गिम्बल लिया है भाई, अभी गिम्बल लिया है भाई। I actually make a vlog. हाँ भाई कर लो भाई, कोई 4K cinematic vlog going on a date for 80 kilometers. प्रोडक्शन से शायद इतना फेमस ना हो पाओ जितना इससे हो जाऊँ। Only to meet like a bald man. अरे आई थिंक भाई दैट इज वर्स। हाँ. भाई वो कोई पहाड़ पे बुला ले, हाँ. कभी व्लॉग ही ना देखने को मिले लोग, वो तो समझ जाना भाई। It was lost footage type of. Then I'll make a Oh my video essay God. about it. तो मेरे लिए वो मेमोरियल वीडियो बनाई हो, R.I.P. अ फ्रेंड वेंट गिविंग टिप्स। अच्छा हाँ. बेसिक आइडिया ये था The best tip of Bumble is you need to buy Bumble. हाँ बाय इट, क्योंकि तेरा 5 किलोमीटर का रेडियस है तो मैं तो तेरे उसमें नहीं आऊँगा, बट मेरा आई थिंक मान ले 30 किलोमीटर का मैंने लगा रखा है, ठीक है। मैं अगर देखो राइट स्वाइप करता हूँ तो मैं तेरे प्रोफाइल पे सबसे ऊपर आ जाऊँगा डिस्पाइट ऑफ द डिस्टेंस एंड एनीथिंग। तो प्रीमियम से ये फ़ायदा होता है, प्लस प्रीमियम से स्पॉटलाइट मिलती है तेरे को, तो तू हर प्रोफाइल पे आधा घंटे के लिए टॉप पे होगा। अब तेरी प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी बात है, दैट ऑल्सो मैटर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीद लिया तो सब हो जाएगा। हाँ, because if you are ugly in your photos, या not that any man is ugly, you do you king. भाई But if देखो, you're ugly, तो मैंने एक what's जगह the पढ़ा point था, of buying Bumble? देखो नॉर्म मैकडॉनल्ड पता है? हाँ. हाँ, उसने एक बात बोली थी भाई, women laugh on everything on a funny handsome guy, whatever a funny handsome guy says. मैं फनी हो सकता हूँ, वो हंस के इग्नोर भी कर देगी, बट अगर मैं हैंडसम भी होऊंगा तो इग्नोर नहीं करेगी। तो रोज़ नहाओ, डिओड्रेंट लगाओ, रोल ऑन आता है भाई, इन्वेस्ट ऑन रोल ऑन लगाओ भाई, उससे But बदबू you नहीं can skip आएगी। all this before you get a date. You're on Bumble, they can't smell you. on Bumble. भाई बट वैसे भी करना चाहिए ना तो ये चीज़ तो। It's just the artistic process sometimes. अरे to not take a shower for like 1 week. बात तो Not सही that है, I do it. I shower every day. ये तो तुझे कोई पता होगा, हाँ. बट मतलब मेरे दिमाग में ना मेरे दिमाग में मेरी पिक्चर चल रही होती है रोज़, मैं मूवी का मेन कैरेक्टर हूँ, दैट्स व्हाट बोल आगे बोल। That's like unhealthy. आई नो, हाँ. बट यार मैं सिंगल चाइल्ड होगा, मैं किससे बात करूँगा, तो मैं खुद से बात करता रहता हूँ, ठीक है। ये तो अभी मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है तो तुम इतनी बातें सुन पा रहे हो मेरी, बट हाँ, तो मेरे दिमाग में मूवी चल रही होती है, तो मैं यहाँ से रोज शावर करने के लिए उठता हूँ, बाल धोता हूँ, शेव करता हूँ, पॉडकास्ट के लिए मैं 130 तक पहुँच जाता, मैं 150 क्यों पहुँचा, क्योंकि मैं शेव करने लग गया था। बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं रास्ते में आ रहा हूँ कोई लड़की मिल जाए और ऐसे बात करने लग जाए तो मैं क्या करूँगा, Of course. आई नीड टू लुक माई बेस्ट एवरी डे भाई। तो वही चीज़, रोज़ नहाओ, नाखून साफ करो, शावर करो, डिओड्रेंट लगाओ, वो सब चीज़ें भाई, ठीक है, but that च्युइंगम खाओ, orbit. Get an ample night's sleep using Vicks ZZ equal, so that you can wake up feeling refreshed यस and इट ready इज़ to वेरी tackle the इंपॉर्टेंट। day. वही चीज़ है Bumble में ठीक है. We're just assuming that you're like taking good care of yourself, so you look good in the photos. हाँ हाँ, मतलब जैसे मैं फोटोज में You लिखता look हूँ average in photos at least. हाँ। And then Bumble, you've bought it. What about? Do you have any texting tips for Bumble? वही है, लाइक
आई थिंक हाई हेलो मत बोलो, ऑब्जर्व द प्रोफाइल एंड देन से समथिंग क्वर्की अराउंड देयर प्रोफाइल, कि वो उनका इंटरेस्ट क्या है या फिर वैसा कुछ करके. डोंट बी जस्ट लाइक हाई हेलो. I'm legit sleepy at this point. I think be a little risky than being lame. It's better to be risky than being lame. But risky का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ऐसा ही भेज दो कि तुम पे केस हो जाए, प्लीज. Don't ऐसा risk हाँ getting भाई. like arrested. भाई नहीं भाई, मतलब रिस्पेक्टफुल रहो. रिस्की भी हो तो रिस्पेक्टफुल रहो, बट ऐसा भी नहीं कि जेल ही जा रहे हो भाई तुम सीधे. और लेम तो लोग किसी को भी पसंद नहीं होते. पीपल वांट टू टॉक टू इंटरेस्टिंग पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वही बात है. सिंपल टेक्सटिंग ट्रिक. Hinge. Hinge. Hinge is what you use the most. So if like somebody wants to find you. I think Hinge right now is the best. Everybody uses Hinge a lot. ठीक है. तो all the interesting and smart people are on Hinge only now. Because Hinge पे ऐसा पूरा prompt वाला system होता है. That you write prompts, then you write the answers खुद से. तो somebody react to your prompt. तो वो होता है कि conversation starter वहीं पे होता है. Icebreaker वहीं पे दे रही होता है. सिंपल है. जो एक्टिव ना होते हैं ना, जो एक्टिव है उस टाइम पे, उस पर दिखता है ग्रीन कलर का सिग्नल आ जाता है, एक्टिव ना लिखा होता है. उनको ही करो, उसके अलावा कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा भाई. समझ रहे. Okay. जो एक्टिव ना हो सिर्फ उन्हें टेक्स्ट करो, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं. एंड वही है, डोंट बी लेम. अगर किसी ने बोल दिया कि आई लाइक एमिनेम, ये मत बोलो कि ओ आई लाइक एमिनेम टू. इट्स जस्ट लेम. बी अ लिटिल क्वर्की अबाउट इट. जस्ट राइट अ बार ऑफ हिम, लाइक अ लाइन ऑफ हिम, or something that he would have said which would be romantic, which is ironical if I think about Eminem. But I would give up at this point if I had to same. go on. I have given up. Let me be honest. I have given up. Like that sounds like way too much work. It's bhai, see, I've never tried online for dating. women, I don't think so. It's too much work because I've seen women की profile. They haven't written it on Bumble. Hinge पे लिखते हैं. On Bumble, women have written nothing and they're still getting swipes and everything. But men, I have researched. हमारा तो मैं Reddit पे communities पे हूँ जिसपे there is this R Bumble community. भाई इतनी Do you want to say that out loud? हाँ भाई, करी है भाई. भाई मेहनत तो मेहनत होती है ना भाई. मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता है भाई. हसल है. हाँ भाई. हाँ. वहाँ की मेहनत यहाँ काम आ जाए तो क्या पता चल रहा है भाई. हाँ भाई. तो वही चीज़ है. You are on Reddit भाई R Bumble करके है भाई, r/Bumble. भाई सबसे फनी जगह है भाई. झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई. क्या क्या देखा है भाई, क्या क्या पढ़ा है भाई वहाँ पे. बट वो सब अंग्रेज लोग होते हैं तो उनकी बायोस बहुत इंटरेस्टिंग होती है. लेट मी बी ऑनेस्ट. Isn't Hinge the one that has like the voice prompt वाला? हाँ. अब वो सब बाकी सब में भी है क्योंकि सबने कॉपी कर लिया. बट हाँ, Hinge पे पहले आया था. I used to वॉइस प्रॉम्प्ट नहीं डाल सकता भाई मैं. I cannot put a voice prompt. like as a sound engineer almost, you should be the one putting her voice prompts. मैंने सोचा था कि एक बार ऐसे ना बीट, तो मैंने सोचा था कि उसमें प्रॉम्प्ट है कि व्हाट डू यू डू ऑन अ डेली बेसिस करके. दिस इज व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस एंड देयर जस्ट प्ले अ बीट. बट फिर वो ऑडियो क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आएगी ना, समझ रहा है, क्योंकि वो तो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो जाएगा ना. It's not like you're doing a show. Wow, you can just Why people literally this is cringe. I think people literally sit with a guitar and they sing a song while playing their guitar उस voice prompt के लिए. How long is the voice prompt? I think it could be like for 1-2 minutes. ऐसा ही है. 1 minute का है, sorry. हाँ, 1 minute is too much time to do I all would this. be like 5 seconds. नहीं भाई, 30 seconds का होना चाहिए please. Would you listen to a 30 seconds audio like from a stranger for no reason? I won't. हाँ. I won't unless and until they're hot. हाँ. But yes. Like if Zayn Malik sends you a 30 seconds. I mean, Zayn Malik, if you're watching. if you are watching. Yeah, his DMs are open. Just cover my song. I don't want anything else. अबे भाई, see, it's also about clout also, ना? Clout is more important, I think. I think it's bad. Cloud chasing is bad. हाँ, cloud chasing is. Cloud chasing is the worst thing. खासकर on Instagram, you see like people doing anything to chase cloud. हाँ भाई. And it's just. I agree. Do you want to talk about some influencers? No. Let's just leave it here only. Okay. We tried to dig this topic, but we are dumping it straight away. Sure. Yes. Yes. ठीक है, तो on Hinge, like जो active ना हुआ है, सब उन्हें text करो. only text people who have that green dot next to them. And if
लड़कियां मेरे को तो कभी नहीं आया सामने से लड़कियों को मेरे प्रॉम्प्ट पे रिप्लाई. इट्स ऑलवेज मी एंड देम दे आर रिएक्टिंग टू इट. Don't hate it हाँ, because हाँ. it gets recorded in this book. सॉरी. We have a very shitty audio setup right now. हाँ. वो हम लोग improve करेंगे. कोई नहीं. हम लोग क्या? आज तो रील बन गई ना. From a random brand that we won't name. हाँ. तो अब तो बढ़िया हो That जाएगा. I probably did name earlier because I forgot to. I think वो कट जाएगा. बाकी बता नहीं. ऐसे हाँ. हम ऐसी जोक बोल देते ना कि वो कट गया. हाँ. तो लोग ढूंढने के पीछे जाके. हाँ. डैम. ये तो और बुरा है भाई. Nice one. तो हाँ. मेरे को लगता नहीं है कि लड़कियां ऐसे प्रॉम्प्ट पे रिप्लाई करती होंगी. But like you do reply. मैं लड़की से बात करी है, ठीक है. आई हैव तो मैं जैसे मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल बनाई, देन आई शो टू सम फ्रेंड ऑफ माइन कि रिव्यू इट, बिकॉज वही तो ऑडियंस है जो हमें अपील करनी है. तो उनसे ही रिव्यू तो बेटर है. तो उनको तो पसंद आती है, बट फिर बाकी तुझे को नहीं आती यार. समझ नहीं आता कई बार, कंफ्यूज हो जाता था. बट हाँ, तो आई डोंट थिंक कि प्लस लड़कियों को लाइक ऑन एन एवरेज डे बेसिस 2 से 3 हज़ार लाइक्स और वो सब आते हैं भाई. 2 से 3 हज़ार, दैट इज टू मच, डोंट यू थिंक? Yeah. they do get it. I don't get it. मेरे को On like Instagram. बम्बल पे आ रहा है भाई असली इंसान 2 से 3 हज़ार. मेरे को एक बार 10 आए थे एक दिन में, एंड आई वाज लाइक आई थिंक आई हैव डैम भाई. I am the Rizzler. फिर मैंने एक लड़की उसी सेम दिन किसी लड़की से I बात hate करी that थी. word. But रिजलर हाँ. जरूरी है भाई थोड़ा ना रिज होना. Have you heard that? एक तो I don't get Riz. Maybe you don't need it, that is why. Yes. Could be. Yeah. रिजली बेयर होना चाहिए, रिजली बेयर. I hate Rizzly the bear. entire. भाई बहुत फनी रील देख रहा था. Isn't there this? Have you heard that song? What song? The Rizzler. नहीं. Thank God I have. Give me your phone. भाई क्या क्या सुनाएगा भाई तू मेरे को आज. भाई. You were saying something? हाँ, मैं कह रहा था कि मैं एक रील देख रहा था, तो उस पर एक बंदा रजिस्टर दे रहा था. तो ही वाज अ वियर्ड गाय. ही वाज लाइक कि किसी लड़की को आई लव यू बोलो, फिर वो तुम्हें आई लव यू बोलेगी और पूछेगी सच्ची, तो तुम बोलो हाँ सच्ची. एंड आई एम लाइक ये क्या बक रहा है भाई, मार थोड़ी तो खानी लड़की से. बहुत वियर्ड होता है भाई कई बार. दिस टिप्स. I don't think anyone on the internet actually gives out good advice when it comes to भाई dating. I was like कि I was also watching this reel of this person and he was like कि कभी भी लड़की से अग्री मत करो. अगर तुम अग्री करोगे तुम सिम्प बनोगे. अब भाई अगर उसको विराट कोहली पसंद है और मेरे को जेन्युइनली विराट कोहली पसंद है तो मैं सेम बोलूँगा ना. Simping is also like the trend of calling people simps. That's like misogynistic, I think. I think so. क्योंकि मतलब it's like it goes against any man trying to just genuinely support. हाँ, exactly, I agree. Not that I've been called a simp on the I internet. agree. I'm like, this is not like a self defense. मैं आज एक वाइस की पोस्ट देख रहा था about soft boys. तो उसमें I think हाँ यही था एंड में. But there is also definitely this like some people just pretend. Feminist man who does feminism to like get laid. हाँ, true. But hate that. Some people just pretend to be nice so that they can get laid. Not you though. You just. यार मैं genuinely ऐसा हूँ. मेरे से बात तो करो. Wait, listen to this. I heard this the first time and then I wanted to prove myself. भाई ये रिमिक्स हो रहा है भाई. ये रिमिक्स हो रहा है आज कर जाती. ये रिमिक्स हो रहा है भाई. I think this is the remix. Original is just some kid singing it. फिर उसको रिमिक्स कर देंगे भाई. Remix it with like Indian beats. हाँ भाई, गुड आइडिया भाई, गुड आइडिया. Like sticking out your gyat or the Rizzler. KVD. Do you get? I have like 5 years. 5 years left on Instagram, after which I'll stop. फिर तू क्या करेगा? I don't know. I don't like my mental health will decline to a point where I can't go to. तू कहेगा कि put the shit भाई इसको फेंको भाई यहाँ से.
मैं तब तक स्पॉन्सरशिप कर लूँगा 5 साल में होता है भाई and then I'll just like get a job or something. हाँ भाई अबे Become an accountant. तेरे को पता है देयर आर दीज प्लेसेस हॉस्टल होते हैं पहाड़ों पे सो दे गेट पीपल हु कैन वर्क फॉर देम एंड दे कैन आल्सो लिव देयर बेस्ट जॉब है भाई यही करो भाई यही कर सकता हूँ पूरी जिंदगी में झूठ भी नहीं बोल रहा भाई One of my friends does that. तुम पैसे भी मिल रहे हैं तुम घूम भी रहे हो तुम वहाँ रह भी रहे हो भाई वाओ व्हाट अ लाइफ It gets depressing after a while. कोई बात नहीं मैंने So I talked to her about it. It gets depressing because on the outside you're looking like you're seeing all new tourists coming in, so you're hanging out with cool people. There are mountains everywhere, like you're getting free stuff. हाँ हाँ रैपर बना दे भाई अपने तो you're getting like free stuff, you're meeting cool people. लेकिन but then also within the hostel there's also a lot of politics for no reason. Because people get bored. How many views can you see unless you suddenly want some like gossip? मैं बताऊँ मेरे को ऐसा क्यों नहीं हुआ सिंगल चाइल्ड और मैं तो अभी भी लोनली हूँ भाई तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता But then the politics starts affecting you. Like if like in her case, मैं म्यूजिक there are इंडस्ट्री में like हूँ 4 people. मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ You don't live with. दैट इज ट्रू They हाँ live आई with गेट those आई गेट people. आई गेट इट आई गेट इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू So if से you're like spending all day, entire day like, with them, and then they are fighting amongst each other for like some petty stupid reason, reasons it gets very irritating after a while. दैट इज ट्रू And also like ambition. That's also a little side point. या Because you do want a career after all. I want a career. मेरे तो करियर बनाने के बाद ये काम कर सकते हैं That you can do. But हाँ कि इनफ म्यूजिक आई हैव पुट एन आउट जैसे मेरा है कि अगर मेरा म्यूजिक करियर पूरा फुलफिल हो जाता है ना जो मैंने सोचा है जो मेरा विजन है वो हो जाता है उसके बाद आई वांट टू गेट इनटू फैशन Okay. यस Then do you want to start putting out controversial opinions about the Jews? भाई क्यों करता है ये सब चीज़ें The Kanye. हाँ आई लव काइने भाई आई विल नॉट आई एम नॉट even hesitate saying this I love Kanye West Despite the recent. despite he's becoming a little fucked up थोड़ा fucked up तो हो चुका है Not a little. He's very. very fucked up The yeah. thing is, I look at Kanye. He is a genius. First of all. First There's of all no debate around that. The thing is, he's like this mentally ill genius who, like, instead of getting the help that he requires, he's surrounded to some extent himself, but also like people have latched onto him that are just like cloud chasers. but yeah. Chasers. The Basically. thing is sometimes so J. Cole has this song I think the J. Cole has this song I'm not remembering the name of it Wait, what? Let me finish. हाँ. So he is just surrounded. He is just now surrounded by like chasers who are like manipulating him almost. So Yeah. you know how? Whoa. he's surrounded with a lot of yes men Who was this? Who was this Fox News woman who like sort of latched onto him? I don't remember her name, but she like her husband is like the CEO of Parler or something, which is this right-wing social media. And then she I got remember Kanye to it. buy that app. Perhaps like I don't think if it actually went through or not. But like she got money out of the deal, and she was the same person जिसके साथ Kanye like put out his photo with hoodies wearing like all lives matter. हाँ I understand It's just disgusting how like the they're thing is the वही है making fun of like this mentally ill person. the thing is कि see हम ऐसे तो LA में तो LA तो is a different place yeah वहाँ तो people don't give two fucks they just want to get the bag first of all secondly there was this song J. Cole का in which he talks about Kanye that how he's surrounded with a lot of yes men so he's surrounded with a lot of yes men they always even if he's wrong they tell him that he is right समझ रहा है वो चीज़ है तो थिंग वॉज कि Kanye used to be the he first of all he changed music that is for a fact He changed fashion also. he changed fashion also he changed music and everything तो वही है after his mother died his mental illness or the thing that he's going through started after that the thing was कि he was not वही होता है ना कि लोग इन्फ्लुएंस तुम्हारे आसपास जो होते हैं उसको बहुत डिपेंड करता है तो आई थिंक ही डिडंट गॉट अलॉन्ग विद पीपल
उतना ज़्यादा. He started fighting with his own There's friends. also a lot of race issues. हाँ वो भी है. Uska, have you heard of him? Like he talks a lot about how there's the glass ceiling for him, especially in the fashion world and stuff, where they won't let him succeed. वही चीज़ है. Because he's a black man coming from the music scene. Right. वही है कि when Virgil Abloh, I think he LV Louis Vuitton I think took him to work, so he was like the first black designer over there. वो चीज़ था, but वही था, to a certain level he succeeded. I think I read it somewhere. This was this conspiracy that he recently died. I agree to him, but I think somebody random conspiracy को लोग कुछ भी लिख देते हैं कि it was the other people in higher than him in the fashion industry who might have tried to kill him. Okay. A weird conspiracy, but yes. He died because of cancer, I think, but... This is why Childish Gambino, Donald Glover calls himself the son of Kanye. Yeah, I love it. Because he has like, उसने very carefully he has not let himself get boxed into like a musician or an actor or something. हाँ भाई, वो Like, I'll do बंदा everything. मस्त है भाई. तूने अटलांटा देखा है? भाई अटलांटा is like one of my favorite shows that I've ever watched. One of my favorites. That's the most. He's like the actual sort of inspiration behind everything I do. मतलब The I music want to make everything. plus the type of shows that he writes, the type of music he makes, it's all so different from each other. भाई मतलब वो तो है भाई, उस बंदे में कुछ तो अलग है भाई. Plus the songs that he has put out all this time. क्या गाना है वो? Redbone. क्या गाना है भाई वो. मैं उसका जीनियस का ब्रेकडाउन देख रहा था, तो द प्रोड्यूसर वाज ब्रेकिंग डाउन दैट सॉन्ग. भाई वो ब्रेकडाउन देख के दिमाग खराब हो जाए भाई. उसने जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे ना स्टूडियो में सब डाल दिए. मस्त है भाई चाइल्डिश गैम्बिनो तो. It wasn't Redbone also like out of spite? कि somebody told him कि you can just do hip hop, not hit the charts. So he just hit the charts and still hasn't made a video for it. हाँ भाई, yes. That's amazing. भाई मस्त बंदा है भाई. Have you seen वो Because the Internet? No. So Because the Internet is like this project Gambino that I think that sort of put him on the map initially. So it's this entire so it's like an album. Yeah. I don't remember कितने 8-10 गाने उसमें, right? But then also the music videos all connect with each other, right? And there's like this screenplay that he wrote and put out. So it's an entire screenplay written in that. समझ गया मैं. So that's insane. Like, that's something. I think I need to watch this. That's something you can aspire to, like. हाँ भाई. And the name is Because the Internet, because like the internet is the reason why he is successful at this point. भाई. He started as a YouTuber. Like his friends started as YouTubers. So do you also, just because of the internet thing you said, do you know about Soulja Boy? Huh? So he was like the first internet rapper. But he was his music was different. just fell off. Yeah, he fell off because he was not able to keep up with the hype. Am anyone to say that? No, he fell off. He was not able to keep up with the trends. Change होता है ना. पहले ट्रेंड्स चेंज होते थे हर 10 साल में, फिर शुरू हर 5 साल में, हर 2 महीने में ट्रेंड चेंज हो जाता है भाई. हर महीने ट्रेंड चेंज हो जाता है भाई एक तरीके से. तो देखेगा तो वही चीज़ है. He stays on top some more. हाँ भाई. प्लस द थिंग दैट वी स्टार्टेड विद काइने वेस्ट. भाई मतलब तू अगर किसी भी अभी इस टाइम पे वेस्ट के आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट से भी पूछेगा ना, लाइक हु इज़ योर इंस्पिरेशन, तो वो काइने वेस्ट का नाम लेंगे. चाहे टॉप 5 में से 5वां नाम ले लिया, पहला नाम ले लिया, बट लेंगे. Because he changed music. तो अपने टॉप 5 आर्टिस्ट बता दे, तू सुनता. Like the big 3, of course. टॉप 5 जो तू रैंडमली सुनता है Spotify पे, जो ग्रुप पे. The big 3. Big 3. Kendrick Cole और Kanye. Drake. अच्छा Kanye. I don't listen to Drake. Big 3 में Drake आता है वैसे. What? हाँ भाई. Kanye नहीं आता. Cole, Kendrick, Drake. But no, I don't listen. Why? You cannot put Kanye on a list. Why he's top on everything. I listen to Kanye, Cole and Kendrick. Okay. Kanye का there was in like बीच में when he was just going hard on that Jew like anti-Semitism, I used to do this thing where I just ripped all of his songs from YouTube so that no money would go to him, but I would still want to listen to his music. वही तो बात है. I just used to listen to his music offline. समझ गया मैं. Like graduation is such a भाई
हर गाना भाई, masterpiece. हर गाना, So I just ripped graduation and then used to listen to it offline. There's हर metro में गाना बैठ भाई, के- हर गाना हिट करता है भाई. हाँ. तो yeah, I just तो ये थी ना I guess उसके अलावा Childish Gambino. Okay, great choice. And then fifth one. I don't think there's any set like fifth person. These four I listen to. पांच The का fifth change होता gets रहता है. rotated. अभी कौन सा चल रहा है? I don't know. Any Indian artist? India, I listen to the Seas a lot. तूने सीज का नया EP I सुना? don't think I can. हाँ. Did you heard that song तैरना? भाई रो देता भाई. बंदा बोलता है उसने, she got her mother eyes, I got my father issues. मैं कह रहा हूँ भाई, गलत गाना है भाई वो तो. Very रो दूंगा भाई मैं, मसला करा दूंगा मैं भाई. नींद आ रही है, तेरे को आ रही है? I think I went past that. Now I'm just spacing out. So जैसे I said the seat and then I forgot what I was talking about. हाँ तो तू मेरे टॉप 5 आर्टिस्ट पूछ रहा था. हाँ, I was telling you my top 5 artists. Right? तो top 4 तो वो है like even internationally or like if speaking about America specifically, I don't think I have top 5 in India. It is Prabdeep is there. I know it's a controversial choice now क्योंकि like I don't know. Is it? I know it's not a controversy. Okay, ठीक है. हाँ, तो Prabdeep is definitely up there. He's the one who got me like into proper hip hop. I don't listen to M.A.V. Krishna वगैरह who like really big. I should, I know, but I don't. अगर तूने बहुत पहले स्टार्ट करा होता ना, so you might have started listening to them. Now I don't because of the fan base. हाँ. It's just so Toxic. at this point. I agree. भाई इसी वजह से I like Taylor Swift and all. We've been talking for an hour and 12 minutes. That's like Damn. 2.5 podcasts. भाई So you're going to say you hate Taylor Swift? no. Mm-hmm. I don't hate Taylor Swift. I hate Swifties. Taylor Swift I'm अच्छी going to बंदी है. cut this part out क्यों? the most. Why the Swifties are insane on the कोई बात नहीं भाई. Every kind of hate is good hate. They will cancel me, not For you, what? for just hosting you on this podcast. So there was this one time I do like this weekly Q&A, right? So somebody asked me Taylor Swift or Kanye. Kanye. I put out Kanye. Yeah, I have obviously. What is the question about? And it's not like I hate Taylor Swift. I've just never heard any Taylor Swift song. See, तो मैंने वो डाल दिया and I received like 5 DMs telling me that they are unfollowing me now. And then a ton of other DMs like, okay, you should start here. This is how you can start. Somebody sending me their playlist. Okay, start here to get into Taylor Swift. हाँ. I don't want to get into Taylor Swift. नहीं मतलब हाँ, it's a good effort at least. It's not. हाँ. I am unfollowing you. देख, अगर तुम्हारी चॉइस है टेलर स्विफ्ट, तो मेरी चॉइस देख कान्ये वेस्ट भाई. I am agreeing that he's fucked and everything. But just the rip thing off is, his music अबे, from YouTube and listen the to thing is कि तूने वो रील देखी, तो I heard this interview of Taylor Swift only. तो Taylor Swift is like, but everything after happened, वो VMAs वाला, she is like, but he is Kanye West. वो भी ऐसे admiration से बोल दिया भाई. तो people should at least understand कि अगर उसको वो admiration है, I am not saying she's a bad person or whatever. I might not like her music or anything like that, but I am not saying that she's a bad person. Because she is not. Kanye West is a bad person. He's acting fucked up. But the problem is with fans. That fans get, अरे वो तुम्हारी भतीजी की लड़की थोड़ी तो है भाई कि तुम उसका स्टैंड ले लोगे. तो Kanye West fans are also pretty bad. Online, like on Twitter, I have seen people defending his anti-Semitism, which is so weird. Don't just the thing is sometimes people genuinely follow his ideology also. Some people are also fucked. But see, me being me knowing other people, I've also seen this phase that Kanye West has saved a lot of our lives. Genuinely saved a lot of our lives. Like people were going through depression, people were trying to kill themselves. He genuinely saved them. So music has that power, and his music gave them the power to like live on. That in itself is like a very big thing. समझ रहा था कि मतलब अगर उन्हें लोगों की जान बचाई है ना, तो उसके कुछ पाप तो धुल गए होंगे ना फिर से भाई. मैं तो यही सोच रहा हूँ. वो चीज़ है. Not defending him or anything. He is fucked.
He is very foul. Do you listen to music outside of rap? Yeah. On So I listen to a lot of city pop. I don't know the name of those. I know one of the artists, Army karke. City pop is like a Japanese genre. I know. Like Japanese jazz. I listen to city pop a lot. I also listen to what? The fifth one currently in the rotation is The Weeknd. Okay, Out of Time. He remixed. Yeah, the sample. Sorry. The Weeknd is also like a controversial choice now because of his show. What did you do? मेरे को नहीं पता. It's a very messed up show. It like glamorizes, almost romanticizes sexual assault and stuff. The fuck? So ये क्या हो रहा है भाई? I know. Just do rap. You're good. गाना गाओ जाओ यार. Extra. Or like be like Donald Glover and be actually good at it. Just don't throw money at it and make shit. तूने क्रिस ब्राउन के शोज देखे हैं? नहीं देखा. तो क्रिस ब्राउन पता क्या करता है? Chris Brown, I know Chris Brown for one thing only. He punched Frank Ocean. What? Oh, yeah, he punched Frank Ocean. I didn't know it. भाई वही तो बात. No, he also domestic violence. That's the big thing. But he also punched Frank Ocean. They fought over a parking space. To be very honest. Okay, that's fine. That's like boys being boys. That is just Delhi, I think. That's just Delhi. We saw somebody do that while just on the way. So that's fine, but like don't beat up your girlfriend. Yeah. But The Weeknd is the fifth one. Chris Brown की सोच पता क्या होता है? वो रैंडम लड़कियों को बुलाता है. They consent. लड़कियाँ consent देने आती हैं. They sit on a chair and then he dances. He gives them a lap dance in a live show. Nice. That is wild. ये हसल है अपने. कैसी हसल है भाई? That is wild भाई. It is. लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती है तो चले जाती है भाई. Damn. How do you recover from that? I break up. ठीक है. Break up भाई. Okay, you broke up भाई. Okay, but then that doesn't mean you'll recover from it. हाँ मतलब after some point how do you get over the trauma that somebody you were planning to marry? बिजनेसमैन बनूंगा फिर मैं क्रिस ब्राउन को शो करवाऊंगा. फिर मैं उसको बोलूंगा तो लड़कों को लैप डांस दे. मुझे दे तू लैप. हाँ अब तुम see I understand. ये fact के मेरा प्यार मेरा इंतकाम. Yes, revenge. Which is just Chris Brown giving me a lap. भाई बट हाँ तो वही चीज़ है. तो अब क्या करना? I think we are way over the time limit. 17 मिनट हो गया भाई. I think we should just stop. Wait, you were giving dating advice तो Tinder के लिए do you have any? नहीं भाई Tinder तो यूज़ मत करो भाई. Tinder यूज़ नहीं करना चाहिए. Too many bots. Instagram? Be respectful if you slide into someone DM. How do you slide into DMs? You, I think, slide very successfully into DMs. Yeah, I have like very large accounts. नहीं. That I met in IRL. Oh, okay. तो बेसिकली अब मेरे को पता है कि अगर मैं हिंज पे किसी की प्रोफाइल दे रहा हूँ तो लोगों ने इंस्टाग्राम डाला होता है, which is little weird. बट अगर मैंने इंस्टाग्राम डाला है तो आई थिंक आई हैव द प्रिविलेज टू अप्रोच देम. ठीक है, तो आई अप्रोच देम एंड आई बी रिस्पेक्टफुल कि ऐसा नहीं है कि भाई तू रिप्लाई करना ही पड़ेगा तो. नथिंग लाइक दैट. I just be like, hello, I saw your profile on Hinge and everything, and I think you are a cool person, and I genuinely want to talk to you. So if you are comfortable doing that, and if you are comfortable connecting with me, it will be grateful. It will be great, and I will be really grateful. So that sounds like an application. It should sound a little formal, I think. Okay. I don't slide into DMs. You don't have to. I don't. Yeah, you don't. Yeah. I think I'm too socially anxious for DMs. I think मैं ऐसे IRL ज़्यादा anxious होता हूँ. मैं Instagram पर IRL it's better for me क्योंकि it's like मैंने अभी डिस्कवर करा कि शायद मैं IRL बेटर कर सकता हूँ. it's better. You just go and have a conversation. Instagram में तुम्हारे DMs से feeling थोड़ी तो पता चलती है. वो चीज़. The worst feeling is that you can get screenshotted. And like, even if you had the best intentions, then you are the thing you were talking about, the application. Like if I screenshot it and put it out, लड़की के friend group में बहुत famous हो चुका है अचानक से. I agree. Yeah. I can never like get over the feeling that okay, 500 people are going to watch this
single message that I sent to any person ever. Not, Like, I only not talk- sliding into DMs now. Yeah, I agree. Nice. Yes. So, Okay, so I think that's it. The moral of the story is that be you. if there's a what? No, if there's a battle between Red Bull and like melatonin gummies, they win out. Melatonin gummies win out. Because अभी हम बस अभी But हमसे पका also है. we only took like one. One. We took one gummy and then half Red Bull. हाँ तो वन ही चाहिए खानी So चाहिए. नहीं but one Red Bull भी होनी चाहिए. हाँ. Like for science. For science. I hope to have you again on this podcast. And With then- the better setup, I think. yeah, we're going to. I don't know. The audio setup probably won't improve, but we'll have like a ton of energy drinks. Yeah. Right? लगा देंगे and ऐसे. then- हाँ. सारे flavors. All of them Red Bull हाँ. because Red Bull sponsor this. Yeah. He has intentions, Yeah, ambitions. yeah. You don't have to give me money even. You're like just Red Bull does not give me. okay. Don't just give me your drinks. That's it. ठीक है. Thanks for coming. Thank you so much for inviting me. Yep. Also, plug कर ही हाँ देता हाँ हूँ. yeah. Please plug everything. 20th of अक्टूबर चल रहा है ना. Sorry, 20th of अक्टूबर को गाना आया था एक साधना with Raj Music and Ashantanu. So you can go and stream that song because Spotify तो कुछ कर रहा है कुछ तो. But हाँ तुम जाके गाने वाले सुनो. YKSDOG on Spotify, on Instagram, everywhere. And yeah, thank you so much for inviting me. Thanks for coming, man. I'm not doing it. The fuck? We've done too much of it, I think. Bye.